see if we are live or not. Oh, we are live. So guys, थोड़ा सा और म्यूजिक बजने देते हैं. Six people are watching already. Hi, 6 people. कैसे हो? How are you doing? Let me just. Hi, Karan Gala. Let me just enable few options. It's tough to यार है. Hi, Shivam Agarwal. कैसे हो? Okay, man. I have to change few things regarding this video. Okay. Now it says that this is a good stream. Okay, ये लोग तो बढ़िया मार रहे हैं. भाइयों पिंग कैसे घटा? क्या डिस्कस कर रहे थे लोग? So hi guys, this is A.N.J from inspiredtorise.com and this is Weekends with A.N.J. Another episode of Weekends with A.N.J. We are back and today we are going to discuss the geophone and we will also discuss few other things. थोड़ा सा म्यूजिक दे ही देते हैं. So we will also discuss few other things like best price phones, best price gadgets for any specific price range. Which are the devices that you should buy? Which are the devices you should not buy? What should you look for when doing a new purchase or anything? So these are all of the things that we will discuss today. And जरा ये video location वगैरह डालने दो, category वगैरह set करने दो, जरा थोड़ा सा time. Please bear with me, please. Just give me a little time. Okay, guys. एंड सुपर चैट इनेबल कर दिया तो श्रद्धालु जन कृपया पैसे छोड़ दें. ओके, मैच शुरू होने वाला है. ओके कहाँ पे थे हम लोग? अब मेरे को ज़रा कमेंट्स देखने पड़ेंगे लोगों के. सो लेट मी जस्ट पहले थोड़ा गन वन खरीद लेते हैं. फ्रंट साइड मिष्टी. ओके, मिष्टी नहीं मिष्टी. ओके, थोड़ी देर छुपना पड़ेगा. लाइव स्ट्रीम कहाँ गई यार? लोगों के कमेंट्स देखते हैं. मिल गए. 4 लोग देख रहे हैं. धन्यवाद 4 लोगों. कैसे हो तुम? तो these people are here. ठीक है. So guys, if you are here watching the live stream, don't forget to hit the like button and don't forget to hit the like button and don't forget to. और क्या करते हैं यार? सब्सक्राइबर ही देख रहे होंगे और अलग लोग तो देख नहीं रहे होंगे. तो do hit the like button and मर गए मेरे सारे बंदे. मतलब यार सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं. तो करना क्या चाह रहे हैं? मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी नाजुक कंधों पे. ओके मार दिया है. खत्म, जिंदगी खत्म. इज्जत डुबा दी यार. गाली दे रहे होंगे लोग मुझे. अरे हाँ, आई हैड टू शो समथिंग टू यू गाइस. मर्दों वाला फिडजेट स्पिनर. मेड इट माई सेल्फ. So you just need a few ball bearings. You can connect one ball bearing after another and just join them and ekdam full maje. Okay, so these guys give the bomb to me. I don't need the bomb, man. That's a huge responsibility for somebody like me who is going to live stream a video. So where were we? So 8 people are watching right now. Hi Mama ji. Dhukma Singh. Hello sir. Okay, thank you bhai. Hello, kaise ho? Okay, and tell me the audio is good or not. Audio volume is good or not. Music का volume कम करूँ, बढ़ाऊँ, क्या करूँ? कुछ बता दो. ठीक है. Do tell me what to do. Okay. How is new Canon 200D? So ask me there नहीं यार. Canon is not dedicated towards making a really good dent in the market right now. ठीक है. मतलब उतने बढ़िया नहीं है इनके जो भी हैं ये products. They should have focused more. अरे वाह, headshot. अंदर से headshot पड़ा. अरे एक और को यस, 2 लौंडे मार दी. घर वालों इज्जत रख ली मैंने घर वालों. ठीक है. एवरीथिंग इज परफेक्ट. कौन सा प्राइमरी डिवाइस है आपका? तो AK गेमिंग फेस्ट राइट नाउ द प्राइमरी डिवाइस इज a OnePlus 5 and there is something new that I'm testing. It's a device by Infinix Mobiles and I guess this is one of the good devices right now and Gioni A1 Plus का एक फुल रिव्यू आने वाला है and audio is good. Okay, ऑडियो थोड़ा इंक्रीज करो. मतलब किसका? म्यूजिक का कि मेरे खुद का ऑडियो? बेस्ट DSLR under 60,000. So Hasbir, you need to clarify it to me first कि you need a DSLR or you need just a camera for recording purposes, because if you need a DSLR just for taking photos, you have to have a clear concept कि what you are going to use the DSLR for.
is the DSLR is would be used for videos, or would your DSLR be used for only photos? You have to have a clear mindset and then let me know about it. ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है लोग आएंगे और मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से गोलियों से भून देंगे। हाँ हाँ हाँ, यही यही लिल हुक ने मार दिया। ठीक है, ओके गाइस, DSLR अंडर 60,000 में स्वास्थ्य एक बार बता दो। ठीक है, जस्ट लेट मी नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। ठीक है, on a 40k budget, should I go for PS4 or build a PC only for gaming? Sachin Adappa. PC only for gaming. Sachin Adappa, first let me know ki do you already have a PC or not. If you already have a PC, then upgrading it might make some sense. Otherwise, for a 40k budget, I think you can make a good PC build, but it won't be like really amazing, but good PC build. You can do 1080p 60 fps gaming on that. Not really perfect, but still doable. And if you build a if you buy a PS4 में ना, there's one thing good that you would get a lot of titles for a long period of time. PC outdated हो जाता है, but console के लिए you get optimized titles for a long period of time. And Dhruv Kumar Singh, हाँ, music is too loud. Oh, too loud. Okay, music कम कर दिया. अब do tell me if it's good now. ठीक है. ध्रुव कुमार सिंह से, सर मेरे पास मैकबुक प्रो है 13 इंच 18/2015 मॉडल, मैं फाइनल कट से एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियोस का साइज 20 GB और फाइनल कट बहुत हैंग हो रहा है, प्लीज सर क्या प्रॉब्लम है? मेरे लैप में ओनली 30 GB अवेलेबल है। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। व्हेन यू एक्सपोर्ट अ वीडियो, what you should do is click on the सबसे टॉप पे जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, click on share video file, click on the option for computer. जैसे उसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं, वेब होस्टिंग, वीडियो एंड ऑडियो, there is an option computer. Select the computer option and then select the good video quality option. And after selecting all of that, all of those things, what you can do now is just export the file and उतना storage नहीं जाएगा। and in case आपको बहुत सारा storage जा रहा है, ध्रुव कुमार सिंह, what you can do is something that I also do, and that is कि चलो दो लौंडे मार दिए मैंने। So what I do is कि I use वहाँ पे रखा हुआ है SSD, Samsung SSD uses USB 3.1 cable to USB 3 cable along with a SATA connector to connect the SSD to my MacBook Pro, जिस पे मैं am reading your comments right now. And Dhruv Kumar Singh, I understood your problem. Your problem is that the storage is very less when you are editing video files. So you can easily solve it by having a huge storage which is external storage. So उस storage की ना read write speed should be good. So that's why I'm recommending a 120 GB SSD. It would be around 4,000 rupees. You can buy a 120 GB SSD Kingston or maybe Samsung 750 Evo. And these SSDs are the ones which you can buy and which would be good for the price range. And then you have to additionally buy a SATA to USB 3.0 cable and then connect them to your MacBook Pro. मतलब ये क्या खेल रहे हैं? तो connect it to your MacBook Pro and Final Cut Pro में you have to go to the settings option and set the setting to have your workspace inside that SSD. So that's what I do in order to save my MacBook also, because मेरा भी 128 GB model and there's not much space for editing really huge files. ठीक है? And AK Gaming Fish says GTA 5 अब तक नहीं लिया. Actually I have bought PUBG, I have bought GTA 5, I tried it again. I had only done stream for GTA 5 once and the stream was really crappy because FPS was really bad. And I would like to tell you कि this laptop is definitely not meant for streaming GTA 5 along with playing it for a decent frame rate. तो मतलब नकली laptop है. I need to upgrade my rig for gaming in order to stream also. ठीक है? Dhruv Kumar Singh, I understood the thing that your problem is not in exporting. I have a laptop, so I just want PS4 or PC for gaming purpose on 40k budget. Go for PS4, Sachin Dadappa. Go for PS4. Dhruv says problem is जितनी भी recorded videos हैं उनका size 20 GB SSD से solve हो जाएगी hang होने की problem. Yes, Dhruv Kumar Singh, if you have a huge storage, पता है, I will tell you why the problems are happening right now. The problems are happening with you right now because आपकी जो video files है वो एक तो बहुत बड़ी हैं, and the second issue with you is कि all of those video files have really मतलब taken all the space on your MacBook Pro's hard SSD. ठीक है? So what happens is कि जो system को एक वो चाहिए होता है ना, it needs some space in order to when you are editing a video, it's being simultaneously decompressed into a ProRes format video. And ProRes का हिसाब थोड़ा अलग होता है. ProRes is like if you have a 1 GB H.264 video which is a MP4 video, in ProRes it would be around 4 to 5 GB or even more depending upon how you are going to export and everything.
So it's a different approach altogether, ठीक है. So ठीक है. Why does the screen of my smartphone doesn't work properly when the charger is plugged on? कौन सा phone है? Subhrit Jyoti Sharma, do let me know which phone is it. And Sachin Datta says thanks for reply. Okay man, hi. ठीक है. So as we says mainly I will use for clicking pictures and will use for video purpose also. So as we यार दोनों ही आपने बता दिए. You have to have a clear goal कि सिर्फ clicking pictures या फिर for videos, only videos. Because depending upon the price range, it would change. कि मतलब सिर्फ clicking pictures के लिए there are some cameras which are really good for that. And your price was below 60,000, and I guess if you get the 60D Canon wala for some less price, then maybe 60,000 में शायद मुश्किल है, प्राइस उसके काफ़ी ज़्यादा है, हाई है. 80D 60D इसमें मतलब if you are able to get any of those for a lesser price, then it's good I guess. Okay, these guys. अरे मार दिया यार, मैं बहुत प्यार से खेला था, प्यार से नहीं, रश करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. प्रॉब्लम इज, हाँ ठीक है, ठीक है भाई. अमेज़न एफिलिएट वाले पैसे खाने लग गए, अर्निंग्स उड़ा दी सारी. एक्चुअली दीपक तनेजा, द थिंग इज कि तो ये तो इशू है ही कि एफिलिएट वाले पैसे खा रहे हैं. देयर इज आल्सो द थिंग अबाउट जीएसटी. आफ्टर जीएसटी द प्राइसेस फॉर एवरीथिंग हैज गॉन लाइक सो अप, जबकि वो नहीं होना चाहिए था. इट वाज अ टैक्स मेंट टू रिड्यूस ऑल ऑफ द अदर बैड टैक्सेस, but still the issue has not been solved. In GST के बाद the things look even bad than before, worse than before, even worse than before after GST implementation. ठीक है. My HTC phone screen doesn't work properly when the charger is plugged on. I guess यार इसका tell me the exact model, which model. And this is an issue with few phones कि they don't work nicely when you have connected the charger. And I will say avoid using your smartphone when it's connected to a charger. This is for almost every smartphone, whether it's HTC, iPhone, anything, because when it's charging, it's in a state of really high temperature when it's charging, and काफी ज़्यादा issues हो सकते हैं if you just continuously push your smartphone while it's getting charged. ठीक है. अरे मार दिया पीछे से. Okay. And ठीक है, ध्रुव कुमार सिंह, please give the link for the SSD you're told to buy. Okay, Dhruv Kumar Singh, after this video gets over, I will maybe post this link over here because right now it's very difficult. I'm on a different system reading your comments. And ठीक है, after this video gets over, there would be comment section that's generated. Dhruv Kumar Singh, just leave a comment over there after this live stream's over. ठीक है. Okay. Any other questions? Okay. जीला डर. Oh hi जानू. Hi जानू, कैसे हो? खाना खा के जाना. हाँ ठीक है. टेक फॉर मोब, अब बताना, अब भी म्यूजिक बहुत लाउड है कि वैसे मैंने काफ़ी कम कर दिया. ठीक है. एंड हेलो. ठीक है. सो हाउ इज कैनन 800D? आई डोंट हैव अ परफेक्ट आइडिया अबाउट कैनन डिवाइसेस बिकॉज सच बताऊँ मैं, आई एम अ निकॉन यूजर and I really prefer Nikon cameras because of the one thing that Nikon in the budget range provides 1080p 60 fps, while Canon similar Canon cameras which provides 1080p 60 fps are really high priced. But if you talk about dynamic range in videos, then Canon definitely has better dynamic range when it comes to videos. So कहीं की जगह पे Canon is really good, कहीं की जगह पे Nikon is really good. So it depends. When it comes to still pictures, I would definitely recommend a Nikon camera in the same price range any day because Nikon cameras are quite good. चलो भाई ने क्लच कर दिया dnutswildkids.com. तालियां, शानदार परफॉर्मेंस. हाँ ओके. अमेजोन वाले बोल रहे हैं कि सारे ऑर्डर ऐप पे खुद से क्या किया है, क्या बकवास कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन है? मतलब यू हैव डन इट योरसेल्फ. अमेजोन इज सेइंग कि आप अपने एफिलिएट से खुद ही बाय कर रहे हो. ऐसा सच बताओ, आप अपने ही प्रोडक्ट्स तो अपने लिंक से बाय नहीं कर रहे, वो थोड़ा शेडी एरिया हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन आई कैन मे बी सजेस्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन. तब मेरे को लग रहा है कि शायद से आपने जहाँ पर प्रमोट करा वो उल्टा पुल्टा हो गया हिसाब. ठीक है. तो अरे क्या कर रहे हो ना, कि जल्दी मरना नहीं चाहता मैं, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है. हाँ ठीक है, कहाँ पे था? ओके. टेक फॉर मोब says bro it's fine now. Screen of my HTC One M9 and also my Samsung Galaxy Note 5 doesn't work properly when the charger is plugged on. Actually this issue happens because when your charger is plugged on, एक सेकंड थोड़ा मेरे को पोजीशन नहीं है. When your charger is plugged on, your device is in a very different state. जो CPU होता है ना, CPU की frequency वगैरह डाउन कर दी जाती है to avoid overheating and a lot of other things. तो device की responsiveness comes down.
when your device is connected to a charger. किसी भी second they can come rushing in. I have turned the audio of the game to 0, so I don't know whether they are coming in or not. This is really great. Okay, they are rushing on the shot. Map पे दिख रहा है, radar पे, ठीक. Okay, make better thumbnails and you can get more views recommended. Okay, gaming fist, I'll make better thumbnails. By better thumbnails, what do you mean? मतलब exactly कैसे better होनी चाहिए? In terms of editing, should I have different lighting effects or something? या मतलब क्या क्या? What do you want me to do? So he's not here. Okay, so these guys killed him. हाँ. What will you prefer? What is UPI? UPI is Unified Payment Interface, pre-MOV. You can connect your Aadhaar card and your one bank account to it with the primary number that you have. And with the help of UPI, you can easily send or pay money and get money from people. Personally, I have a very bad experience with UPI. अब तक मेरा UPI सही से चला नहीं है. पता नहीं क्यों it says that my debit card details are wrong. हर बार वो बोलता है ये मेरे को ही बॉम्ब से मार रहा है, मेरा ही अपना बंदा. कैसे लोग हैं? ठीक है. ओके, कैंप करते हैं, आएंगे. ओके, ठीक है. विल यू प्रेफर बाइंग DSLR ऑनलाइन ऑफलाइन? सो हसवीर, आई बॉट माय DSLR, मार दिया. So Hashbir, I bought my DSLR online, and considering the price factors etc. online I would prefer if you buy it from Amazon, because Amazon पे दिक्कत हो जाती कई बार, but most of the times मतलब it's like 90 times out of 100 you are safe. ठीक है. Better thumbnail equals to clickbait thumbnail. शिवांश पुरजानी, you are right, but clickbait यार दिल नहीं मानता है clickbait करने का. मर्दों वाला फिडजेट स्पिन चलो, clickbait मत करो. ओके, हाँ हाँ, इस दिस टाइम ओनली यूएसपी. अब भाई कोई गन नहीं लूंगा, या इसी से ही खेलेंगे. ठीक है. हाँ. मेक अ वीडियो ऑन बिटकॉइन एंड व्हाई इट्स नॉट पॉपुलर इन इंडिया. किसने बोला बिटकॉइन पॉपुलर नहीं है इंडिया में? सुब्रज्योति शर्मा. A lot of people I know who held money in so many different things, they have all come back, मतलब resorted to storing money in Bitcoin now. It's very popular in India. You are just not talking to the right people. And सेम पिन कोड वाले पैसे खा गए, बाकी के तो अर्निंग में शो कर रहा है. ठीक है. हाय द A&A स्टूडियो, मतलब क्या कैसे कैसे नाम रखते हैं. A&A स्टूडियो, M&M सुना था. पेटीएम से डीएसएलआर लुकिया. सुहास फिर नहीं, पेटीएम से मत लेना डीएसएलआर. पेटीएम पे जितना स्कैम होता है ना, उतना तो भैया कहीं नहीं होता. पेटीएम हैज द मोस्ट नंबर ऑफ स्कैम्स. बी कूल ने मार दिया. मैं चौड़ में घूम रहा था, बी कूल ने मार दिया मेरे को. अच्छी गन लगी थी बी कूल के पास. ओके, you can edit with Photoshop. I can help you. I've done course of Photoshop, so if you need any help then ask. AK Gaming Fist, पता क्या करो? The past 5 videos that I have made, उनकी जो thumbnail है ना, you take that thumbnail from YouTube, 1280 by 720 का thumbnail you will get. Edit them on Photoshop. Send them on mail to me. My email ID is ANJ@i2r.in. Send them to me. ठीक है. I will see if they are like good, तो मैं भी वैसा सीखने की कोशिश करूंगा, और मे बी आई विल कॉन्टैक्ट यू फॉर मोर वर्क. ठीक है. ओके. नोट 8 पर अपडेट वीडियो बनाओ प्लीज. ओके मैन. शुभम पटवाल से रिव्यू यूनिट कैसे मिले? यार रिव्यू यूनिट मिलने के लिए फर्स्टली योर वर्क शुड बी दैट गुड दैट यू आर नोटिस्ड बाय पीपल. दूसरा, आई विल से दैट इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू गेट रिव्यू यूनिट्स आफ्टर फ्यू ऑफ माय वीडियोस रैंक. सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी न्यू स्मार्टफोन, किसी भी एक स्मार्टफोन के लिए वंस यू रैंक ना, देन दैट कंपनी नोस किया दिस पर्सन इज रैंकिंग फॉर दिस वीडियो. ये इसका जो वर्ड या जो एक मतलब इसका जो ओपिनियन है ना, दैट मैटर्स व्हेन इट कम्स टू आवर स्मार्टफोन. तो वो कंपनी आपको फोन जरूर भेजेगी अगली बार, बिकॉज दे वांट कि मतलब उनका जो एक वो जा रहा है ना, जो एक नैरेटिव बाहर जा रहा है, वो ठीक हो. मतलब अब इफ यू डोंट हैव द स्मार्टफोन, कई बार ऐसा होगा आप गड़बड़ कर दोगे, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बता दोगे जो फोन में शायद नहीं भी होगा. तो दे वांट कि यार वो उनसे रिलेशन बनाना चाहते हैं जिनका कि मतलब दोज हु हैव अ रीच ऑन यूट्यूब या एनी अदर प्लेटफॉर्म. तो इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर जिसकी अच्छी रीच है, देन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू गेट रिव्यू यूनिट्स. ठीक है. अब इफ आई टॉक अबाउट हाउ पीपल गेट रिव्यू यूनिट्स, देयर आर पीपल जो फैशन ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, उनको भी रिव्यू यूनिट्स मिल जाते हैं when they are doing almost nothing. मतलब वो क्या करते हैं, they just take a selfie with the phone and they get a review unit for that. तो मतलब the scene is like quite different right now. तो I would really suggest you to, अरे मार दिया बी कोल, लेकिन बी कोल भी मर गया. ठीक है यार. ट्राइपॉड का रिव्यू नहीं मिला. अरे करण गाबा यार, ट्राइपॉड वहीं पे ही रखा हुआ है. चलो ठीक है, तुमने रिमाइंड करा दिया. GoPro 690 ट्राइपॉड है, इसका रिव्यू अभी जल्द से जल्द बनाता हूँ. ठीक है, खत्म करता हूँ इसको. ठीक है. What's your opinion about the explosion of Redmi Note 4? यार A&A Studio यार, any phone when it's made
नॉट एवरी यूनिट इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट, दैट्स फॉर श्योर। और इसमें मुझे लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल का भी एक थोड़ा इशू आ जाता है कि यार Xiaomi इज नॉट, मतलब Xiaomi एज अ ब्रांड इज नॉट समथिंग एज बिग एज सैमसंग और मे बी एप्पल, कि उनके क्वालिटी कंट्रोल 100% करेक्ट हो एवरी टाइम। तो दैट्स व्हाई आई गेस दैट एक्सप्लोजन इशू केम। और हर यूनिट तो नहीं फट रहा ना, एक दो फटे तो यार चलो समझ में आता है, बस किसी को हानि ना पहुंचे, किसी को दिक्कत ना हो, एंड नो वन शुड बी हर्ट, दैट्स द मेन पॉइंट। Can I learn HTML online? So ask me, yes, you can learn HTML online. w3schools.com पे there are many things. lynda.com पे there are courses available, and there are a lot of other websites जहाँ पे there's a lot of information present on how to code in HTML. HTML कर रहे हो तो पहले basic करना, then learn about HTML5 and CSS3, and then try to learn a little bit about JS, JavaScript. ठीक है? Okay. I have a company, they make one thumbnail for $1, but definitely you will see change in your views. They make transactions through PayPal. चलो एक एक गेमिंग फेस्ट, दैट्स व्हाट आई वांट यार। कोई भी मेरी जो 4-5 वीडियोस आपको लगती है ना जिन पे मतलब व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, जो अभी 4-5 मैंने रिसेंटली बनाई है इन द पास्ट 2 वीक्स, जस्ट मेक थंबनेल फॉर मी फॉर दोज वीडियोस। आई विल टेस्ट इट, अगर मुझे बढ़िया लगा आई विल डेफिनेटली गो फॉर द पेड सर्विस आल्सो। ठीक है? Play Black Ops 2. Subrajyoti Sharma, the laptop that I'm playing on is so shit. I can't play Black Ops 2, man. I have bought PUBG, I have bought PlayerUnknown Battleground. I have bought so many nice games, and still I can do nothing on this matlab laptop, because right now also I'm playing on 1024 by 480 and I'm streaming on 854 by 480. That's the level of thug life that I'm living on. So just please try to understand my rules. इनको ना अंदर घुस के मारो इनको धुएं में। ठीक है, हाँ बस हो गया। थोड़ा ना लॉन्ग रेंज खेलते हैं ये लोग आके हर बार मार देते हैं। एक चीज मेरे को सिखाई थी एक बंदे ने, मुश्किल है बट हो सकता है। ओके चलो, दरवाजे पे एंगल लेके बैठे हैं। इफ एनीबॉडी कम्स दे आर गोइंग टू बी डेड, अगर मेरा ध्यान स्क्रीन पे नहीं गया तो लेट्स सी द कमेंट्स। ओके, एएनजे व्यूले तो नहीं हमें, नहीं रोहनदास, हम आपको व्यूले नहीं, भूले नहीं हम आपको, इट्स भूले नॉट व्यूले। तो फिर भी आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं वक्त तो दीजिए। अरे मेरे भाई साइड से मार दिया लड़के ने, छुप के बैठा होता कैंपर। ओके, DM them through Twitter _mobile graphics. Okay, gaming fest for sure _mobile graphics लिखने दे यार, पेन पेपर ही नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, _mobile graphics, ठीक है, I will do it. Okay, and any other questions? Okay. Hi people. दीपक तनेजा से व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहां पे रेफर करता हूँ। अच्छा दीपक तनेजा, दैट्स द इशू, इफ यू आर सेंडिंग लिंक्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप ना, एक वो ट्रैकर जनरेट होता है गेस, तो उसमें ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक ही व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक्स भेज जा रहे हो ना, आई गेस ट्रैकर वहां पे, दैट्स व्हाई मे बी दीज आर द इश्यूज दैट आर कमिंग। जब आप अपने एफिलिएट लिंक शेयर करते हो ना, try to make sure you send them on a platform जहाँ पे they access it through a application, ठीक है, या तो फिर they access it through a PC, जैसे PC पे proper, because otherwise ना वो जो एक वो जैसे when a URL opens up, एक वो referral ID आता है, अगर वो referral ID किन्हीं भी एक दो केसेस से ज़्यादा में सेम है, then issues will happen and Amazon will say कि you are scamming them, ठीक है। Okay, you will see samples on their Twitter. Okay, रोहन दास says I may not comment on your every video but I do watch all your videos. रोहन दास देखो यही तो पाप है, अगर आप हर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करने में क्या जा रहा है भाई, 1 मिनट तो लगता है, नहीं यही तो स्कैम है जी, इसी चक्कर में तो हमने आप सरकार को वोट दिया था, वो भी स्कैमर निकली। ओके ठीक है, ओके I will see the samples on Twitter _mobile graphics. Okay man, ठीक है, I will do that. And हाँ, what we were talking about, I was talking about best price phones and gadgets in a particular price range. So I say that let's talk about phones first. So if you're somebody who's going to buy a phone right now in India and your price is like in 6,000 rupees and maybe below that or something near that, then I would recommend you to buy Redmi 4A in 6,000 rupees. Below that, it does not make sense to buy anything else. It's the best in class right now for that price range. And then if you go below that, then Jio phone jo hai na, it would be really great phone. But if you want an Android phone, it's not an Android phone.
ये एक थोड़ी दिक्कत होगी, एप्स वैप्स नहीं चला पाओगे, तो दैट्स समथिंग जिसका मेरे को लगता है कि इशू हो गया। अरे मार दे, अरे क्रिस्टोफर है ना ये, दिस गाय इज लाइक चोरी चोरी छुपे खेलता है लड़का। हाँ ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ ठीक है, ओके मैन, ओके रोहन दास, आगे से कमेंट आएगा, थैंक्स थैंक्स। ये देखो भाई बंदा मतलब छुपके से खड़ा, ठीक है ओके। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, Redmi 4a in 6000 price range, and if you go above that, maybe if you go sub 10k, sub 10k में ना best phone I guess is that Redmi 4 3GB 32GB. If you go a slightly higher up, around 12k, then the best phone that you can get for the price is Redmi 4 4GB RAM 64GB storage. If you go around 15,000 rupees, the best phone that you can get is Honor 8 Lite. बहुत बढ़िया फोन है इन द प्राइस रेंज 15,200 का, it's retailing around that price on amazon.in, and for the price it's a really great phone, ठीक है। and please type your email id, I'll request them to make a sample thumbnail and send it to you. Okay, I am typing my email id यार, इस पे ना I have kept it on a very high thing, so I'm typing my email id, ठीक है, I have typed my email id, ठीक है ठीक है। Tech for Moves says, bro, do you recommend people to buy Chinese smartphone like Xiaomi, etc., as people in India are avoiding Chinese products? Yeah, I will tell you one thing. Avoid Chinese products. आपके पास बचेगा ही क्या लेने के लिए? Tell me one phone in the market which does not have Chinese components. I will tell you one more thing. If we talk about the electronic products employ rare earth metals. More than 80% of Earth's rare earth metal supplies come from China, and China is in a very, जैसे जो materials used like silicon, gallium, germanium, मतलब जितने भी the metalloids that are used in the production of electronics, most of them come from China. How do you think that they are really easily able to capture the market, manipulate the market? They have so much natural resources when it comes to these silicon chips and all of these things, and that's what they are capitalizing on. एंड आप एक दिन में मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया की हटा नहीं सकते वहां से, चाइना से, दैट्स द मेन थिंग। दे हैव सो मच cheap labor available that it can't be replaced that soon. That's the main issue. Stall them for as long as you can. Okay, दोबारा स्मोक तो डाल दिया, देखते कब आते। Okay, so that's the thing यार। अब if you don't buy a Vivo phone, if you don't buy a Xiaomi phone, if you don't buy an Oppo phone, मत buy करो। But then what will you buy? In the if you are a budget conscious person, what will you buy? There is no phone. If there is something by Samsung, it does not provide you that much features when compared to something else by some other brand in the same price range. ये यार सारे तो बचे ही हुए हैं। All the enemies are alive. I am the last guy alive. वाह रे बाबा, वाह रे बाबा। यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैं क्यों अकेला जिंदा बच रहा हूँ? इन लोगों को खेलना नहीं आता क्या? मेरे को तो ऑडियो भी नहीं सुनाई दे रहा है, हद होगी। बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड। ओ ये जय माता दी हो गया हमारा तो बढ़िया वाला। वो लोग यार हंस रहे हैं, गाना गा रहे हैं। There's one person in this live stream, जावेद नाम से। That guy he plays guitar while people are playing, मतलब playing the game. ऐसे लोग हैं दुनिया में, ठीक है। What's about next Lenovo killer note? बहुत टाइम है यार अभी। What is better, Lenovo K6 Power or Moto G4 Plus? I think Moto G4 Plus is better. But still, जिस प्राइस पे ये phones बिकते हैं ना, there are better phones available right now. So it's not much of an issue. अब तो अच्छी लग रही है, but लेने का देने। अरे मार दिया। ये बंदा खड़ा था, देखो रिप्ले देखिए। मैं चुपचाप चल के आया, ये बंदा भाई साहब, okay. The people who are saying don't buy me phones, no Indian company makes so good phones and price them so aggressively. Micromax is taking 6 months to take another phone and place their company logo. So, and AK Gaming Fest, that's the thing, na. If you're talking about price versus performance, the best price versus performance is being given by Xiaomi. I will tell you one thing. I saw the Mi Max 2, right? If you have seen, there are 2 videos on the channel, one in Hindi, one in English. I saw that phone recently. I used that phone recently, and I will tell you personally, I am not a very fan of big screen phones. I prefer handy phones. But Mi Max 2 was a great phone. If you talk about the 6.44-inch display size, even after that, it was a great phone.
जो एक मतलब द क्वालिटी वाज प्रेजेंट ऑन दैट फोन, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा उस फोन का. एंड दैट्स व्हाट Xiaomi has maybe excelled on, कि प्राइस वर्सेस परफॉर्मेंस उसमें काफी अच्छा हो गया है विद टाइम. दैट्स द थिंग. रोहन दास सेज आई हैव टू गो एंड स्टडी. पढ़ो भाई पढ़ो, स्टे लॉजिकल, स्टे इंस्पायर्ड टू राइज. हाँ पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो. हाँ ठीक है, बढ़िया. ऐसे गेम गेम देख रहा है, मतलब यही भारत खराब हो रहा है, यही पढ़ाई छोड़ के गेम देख रहा है. छी छी. ओके. What is wrong with Xiaomi? Why they launched Mi Max 2 instead of Mi 6? यार Antonio Almeida, they launched Mi Max 2 because I guess एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है. I will tell you why. Whenever they launch flagships in India, they rarely get high sales because जो उनके flagships होते हैं, when it comes to something above 30K, why would not a person buy something like the OnePlus 5 rather than go for the Mi 6? That's the main question. अगर आपके पास पैसे हैं, if you have the choice, you would definitely buy something like OnePlus 5, which would stay a great phone for a long period of time. And then bomb fata, bomb fata, bomb fata, bomb fata. नहीं फटा. अरे अच्छा अच्छा. ठीक है. तो that's what I'm saying कि मतलब a company like OnePlus 5 makes a really great phone which would be great for another 1 or 2 years. If you buy a flagship phone in 25,000 plus range, you won't buy a Xiaomi phone. Trust me, you would buy something like OnePlus 5. And that's where Xiaomi understands the market, and that's why वो Mi 6 नहीं लाए इंडिया में. अगर वो लाएंगे बिकेगा ही नहीं उतना. Tell me यार, Mi 5 उतना बिका इंडिया में, उतना नहीं बिका Mi 5. That's how things are changing. Okay. Hi on this buy. Okay. Lenovo Zook Z2 Plus. Zook Z2 Plus is still a good phone, but if I talk about the price range now, there is competition from something like Redmi 4 or even the Honor 8 Lite. That's also a great phone. ठीक है. रोहन दास, हाँ भाई यही सरकाजम था यार, तुम्हें इतनी देर में समझ में आ रहा है, हद कर देते यार तुम काफी. हाँ ओके ठीक है. ओके, any more comments? And I would also like to say one thing about the whole the बंद वाला thing. कि यार तुम बंद कर रहे हो इन सबको, इन कंपनी को. यू आर सेइंग कि कंपनियां बेकार हैं, ये है वो है, and a lot of other things. But did you think about कि if those companies are really bad, आप क्या खरीदोगे फिर? Is there any choice that you guys have when it comes to buying something new? Do you have any choice? Do you have any choice left? नहीं है. There is no choice. There are like 1-2 players in the market like Intex है. You have Micromax. कितने बढ़िया फोन बना रहे हैं. नहीं, Micromax has mostly rebranded OEM phones and people don't want to buy them. Most of the people don't want to buy them. जो लोग थोड़े बहुत खरीदना चाहते हैं वो अच्छे लोग हैं. तो but most of the something like Eureka Black was okay, but a lot of other phones are not that great. So it makes a difference. जाओ गन वन लेने दो, बाद में करेंगे ये सारा ज्ञान, बाद में देंगे. हाँ ठीक है. According to you, which flagship phone Xiaomi will launch later this year? Please answer. Yeah, Antonio Almeida, I think there is time, but थोड़ा वो tease कर रहे थे. They are trying to make something with a infinity display sort of thing. I think आएगा जल्दी. Time लगेगा but आएगा. It will take some time and they will make something like that. And ये pistol round है, तो इसमें ना मेरे पास chance है थोड़ा ना, मैं घुस के मारता हूँ. Let me see if I can do something here. Okay. B side seems clear. यहाँ पे कोई नहीं बैठा. एक बंदा वहाँ पे बैठा था, लिटिल हब, वो तो मर गया. एंड आई गेस देयर मस्ट बी वन गाय हियर. नहीं है कोई भी. ओके, मैंने साइड खाली कर दिया. बहुत बढ़िया. अरे वाह. A.N.J टू आर किल्ड एंड बी वाइट फ्लैशबैक. भाई प्रभाव है भाई का यार, ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा है. 2000 किल गन पे ऐसे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे. या सीरियस प्लेयर्स, प्रो MLGs. हाँ ठीक है, बस ज्यादा हो गया. Okay. Mi Mix coming to India. यार I don't think so. Mi Mix is coming to India. I will say this because Mi Mix was a exclusive phone जिसके बहुत कम units बिके थे, मतलब बने थे, and उन कम units में से I don't think they will bring something to India. Chances are really less. उतरी आ गए. So I'm going to A side. And the guys are going to B side. Wajiva. Let's plant bomb. 735608 number याद रखिएगा. Russian made Yoda phone is a unique phone and secondary back screen. Why it's not sold in India or worldwide?
आई गेस वो इंडिया में आया ही नहीं दैट प्रोडक्ट. दैट वाज ग्रेट प्रोडक्ट. मैंने आई हैड सीन देयर वीडियोस फॉर दैट प्रोडक्ट Toyota phone. It had a secondary e-ink display on the back and a full front display. But I guess when it comes to something very unique like these products, very unique products, and which have a very different niche market, then they mostly don't come to India because people are not selling them in India. Okay, P90 वाले. हाँ ठीक है. Will you get Geo feature phone? Antonio Almeida, your chances seem less right now because most of the reviewers have got the Geo feature phone. I will buy one for review purposes if Geo does not provide me with one Geo feature phone. Because I guess it's necessary for me to at least review that phone once. And I think for 1500 INR that phone is good. But just tell me, आप 3 साल तक वो फोन चलाओगे? नहीं, कोई नहीं चलाएगा. अगर आप इफ यू बाय इट एज अ बैकअप फोन देन इट्स ओके कि यू वुड कीप इट फॉर 1500 INR. डोंट साउंड टू मच फॉर अ जियो वोल्टी फोन, देन इट्स ओके. ठीक है ठीक है ठीक है. लेको कंपनी कहाँ गई? ध्रुव कुमार सिंह. या लेको हैज ऑलमोस्ट लाइक रिड्यूस देयर ऑपरेशंस बिकॉज दे वेंट इनटू लॉसेस बिकॉज ऑफ ओवर स्पेंडिंग इनिशियली. दैट्स व्हाई लेको का काफी ज्यादा बंटा धार हो गया यार. एक तो राउंड जीत जाओ, एक अकेला बंदा बच रहा है, कुछ तो कर लो यार. नाम दोबारा. हाँ कर लिया, बहुत बढ़िया. ठीक है. Antonio Almeida says, is it worth buying for smartphone user? Antonio Almeida, I will tell you one thing. If you have a smartphone which solves all of your use cases and you don't need another phone, then why should you buy it? अपना पैसा बचाओ यार, फालतू की चीजें क्यों खरीद रहे हो? If you really need it and if you're somebody जिसका बजट बहुत कम है, 1500 रुपए का अच्छा फोन लेना है, जियो पे बात करनी है, फ्री कॉलिंग वगैरह का फायदा उठाना है, 153 के प्लान्स यूज करने हैं, then it makes sense to buy something like Reliance वाला जियो का फोन, जियो फीचर फोन. Otherwise, why buy Geo feature phone? It's not that good. So I'm going to short. People are also coming in from the behind. Okay. अरे मेरे भैया कहाँ बैठे हो? What the? What did I do, man? तो बढ़िया opportunity छोड़ दिया. वो कहाँ है? ये long पे. Where are the दुश्मन्स? Okay. दुश्मन्स ने मार दिया हमको. Okay. Antonio Almeida says yes. हाँ तो वही तो बात है ना. And I would also like to stress upon the fact, जैसे I was talking about best price. So now let's get back to that best price thing. 15,000 में I told you that the best thing is the Honor 8 Lite. If you go slightly higher, around 20,000 something, the price range is like very much populated by a lot of phones. Selfie वाले phones इसमें बहुत सारे. Performance में there are less phones, but if you're somebody who is looking for performance plus big screen, then above 15,000 you can buy the Mi Max 2. But if you're somebody who does not want a big screen, then something like Samsung's J7, J7 Prime, the latest one, it's a good phone in the pricing. It's a good phone. Still, there are other options, but it's a good phone in terms of robustness and quality. And front side मिष्ठी को ले लेते हम. मेरे को एक बहुत अच्छी लगती है. Just look at the colors, man. Look at the signatures. NVK and सबके signatures. हाँ ठीक है, कहाँ पे थे? Okay. There are comments. सदानंद इप्तिवासी स्कूपैड कुल वन में नोगट अपडेट कब मिलेगा यार? नोगट अपडेट का वो आ चुका है. दैट बीटा थिंग इज देयर. बट आई थिंक अभी बहुत टाइम है नोगट अपडेट फाइनली पूरा आने में. पता नहीं, दे आर टेकिंग सो मच टाइम टू टेस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दैट्स रियली बैड. ओके, घोस्ट ने मार दिया, बहुत बढ़िया. हाँ, MIUI 9 कब आएगा इंडिया में? एक गेमिंग फेस्ट MIUI 9 का ग्लोबल रोल आउट जल्दी होने वाला है. इट वुड कम टू phones like Mi Max 2 and phones. There are few other phones, but I think a lot of phones won't get the MIUI 9 update. With MIUI 9 update, you would get Android Nougat on almost every phone जिसको update मिलता है, but it will take some time. Get Far Cry 4 as your next game. Subrajyoti Sharma, what's the use of buying these good games? I have bought like so many games in past 1 month, but what's the use of buying these good games if my laptop is like really bad and it can't stream anything beyond? Even this game is right now being run at the lowest possible settings, multi-core वगैरह rendering सब off कर रखा है, तब जाके ये game streamable है. That's why. Apple Motion versus Adobe Premiere. Dhruv Kumar Singh, if you are somebody who just edits video in terms of making videos for YouTube, then Final Cut Pro and Apple Motion combination is good. But if you are someone who is
like much into special effects वगैरह, then Adobe का जो पूरा suite है ना, with Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects and everything, that is much better in terms of मतलब making like really professional videos with animation, effects, intros, ये सब कुछ वो बहुत बढ़िया है. Final Cut में हो सकती है all of these things, with motion also you can make all of those animated things and stuff, but वही है कि अरे यार आ गए क्या, ठीक है, but that's what I'm talking about कि it's not that great in terms of, if you talk about filmmakers use Adobe Premiere Pro, very less filmmakers use Final Cut Pro. I have seen only most of the YouTubers using Final Cut Pro because it's good for the use cases that they have. अरे भैया अरे भैया अरे भैया ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे भैया, अरे ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे मार दो, गलत बात है. भाभी जी को प्रणाम कहना, कहाँ पे छुपे हो बंदे, और है बंदे, अरे 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 ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे मार दो कि गलत बात है तो, अभी तो हमने मुंह दिखाई करी है. हाँ चलो ओके, सो वी किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल हियर फाइनली. आई थिंक वहाँ पे एक बंदा आया, मारो उसको, एंड यहाँ से अगर कोई आ जाए तो स्मोक कर दो. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके ही किल्ड वन ऑफ माय पीपल. इसको आने दो यहाँ से. लेट्स जस्ट कैंप अ लिटिल बिट. We will bait this guy. Let him come out in the open. So he threw a grenade. अरे भैया अरे भैया अरे भैया ऐसे कैसे मजाक थोड़ी चल रहा है. बॉम्ब प्लांट करा इन्होंने ए पे, मैं बी पे लौंडे मार रहा हूँ. मतलब MVP A.N.J R2R.in for most eliminations. Look at this. Feel proud. गालियां चल रही नीचे, गालियां. P90 तो यूज भी नहीं करा. ओके ठीक है. हाउ इज मी मैक्स 2 टू व्यू यूट्यूब? यार यही तो मैं बता रहा हूँ, मी मैक्स 2 जैसा फोन ना इज ग्रेट फॉर कंटेंट कंजम्पशन. स्क्रीन बहुत मस्त है इसकी. सो अ 6.4 इंच फोन इज ग्रेट फॉर समथिंग लाइक यूट्यूब. सारे लोग आ गए एक साथ P90 लेके. मेरे मॉम को यूट्यूब चैनल है होममेड क्राफ्टिंग, भैया सब्सक्राइब कर देना और अपनी मॉम को भी बोलना देखने को. अरधोप कुमार सिंह, मेरी मॉम जो है वो यूट्यूब उतना नहीं देखती है, एंड व्हाटएवर शी वॉचेस ऑन यूट्यूब देयर आर मोस्टली कुकिंग चैनल्स देखती हूँ, वो ये सब नहीं देखती. ठीक है. Xiaomi का बूट लोडर अनलॉक पॉलिसीज फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ जी. Redmi Note 4 का नोगट अपडेट 3 महीने से बीटा में है. इतना टाइम थोड़ी लगता है कि गेम फेस्ट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दे टेस्ट, एंड दैट्स एक्चुअली गुड कि दे टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि फोन का स्टेबल अपडेट आए. कई बार फिर भी दिक्कत हो जाती है. हाँ. So okay guys, I guess this is enough for today. We discussed a lot of things. Price के बारे में अगर मैं बात कर रहा था, हाँ, the final thoughts that I would like to put. If you are somebody who is buying a smartphone about 30,000, then you have two options: OnePlus 5 and the Honor 8 Pro. Buy the OnePlus 5 if you want something which will get updates for a really long period of time. Buy the Honor 8 Pro if you want a really great, gorgeous display. बहुत बढ़िया दिखने वाला फोन. 128 GB of storage for a lesser price range. And I guess more performance, but ये कि थोड़ा बहुत heating issues are present in the Honor 8 Pro, and those are the things that need to be fixed. So makes sense. And if you're somebody who's going in the ultra high budget segment, then still the Samsung Galaxy S8 is one of the best phones. But wait for the Note 8, it's going to be a great phone. Which DTH do you use? Antonio Almeida, I used Tata Sky earlier, but पता नहीं घर वालों ने चेंज करा के केबल लगवा लिया. I don't know why. Set top box होता है ना HD वाला, they started using that after some period of time. I think कि Tata Sky में उतने channels नहीं आते for the same price range. And I don't watch television. देख लो मेरा चेहरा, I don't watch television. I don't watch television at all. मुझे टीवी पसंद नहीं है और क्या लगता टाइम भी नहीं मिलता टीवी देखने का. तो the only channel that I watch sometimes is History TV 18, and उस पे I think the content is like really amazing on History TV 18. तो it's one of the best channels out there. And आग लगा दो घरों में इनके. हाँ ठीक है, कहाँ पे तुम? Okay. GOT देखते हो? No, एक Game Fest. I don't watch Game of Thrones. But what I did was, in order to brush up on Game of Thrones history, I read the synopsis of all of the seasons. ठीक है? And if you remember, I did that review video for the Panasonic P55 Max. What I did for that video was I played a Game of Thrones season. I played Game of Thrones season 6 on the time lapse for that. पता है गलती से क्या हुआ? I watched one episode for that. I was really intrigued by the episode. वो कौन सा episode था जिसमें there is that girl जो भिखारी बन के पड़ी होती है और उसको कोई ट्रेन कर रहा होता है. वो मेरे को अच्छा लगा episode, but आगे मेरे को समझ में नहीं आया तो I didn't watch other than that. ठीक है. अखिल विश्वासन says, do you come to Pune? हाँ.
नहीं यार, पुणे नहीं है। अखिल विस्वान। मैं एक आई हैव कम टू पुणे वंस एंड दैट टू फॉर दैट ऑनर इट प्रो इवेंट। अदर देन दैट आई हैव रियली नॉट गॉन टू पुणे और एनीवेयर एल्स। चलो देखो, आपको सिनेमैटिक एंगल पे मैं पूरे मैप का दृश्य दिखाया था। महाभारत चल रही है यहाँ पे, महाभारत। वो बस बस बस, क्रेजी कैमरा एंगल्स। ये किसको मार रहा है, किसके बीच में? बर्ड्स आई व्यू देते। कहाँ पर था ये बंदा? वो बस दिसका है। अरे कहाँ 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 घुसा दे कैमरा? दुश्मन लोग है कहाँ पे? ओके, हियर इज द बॉम्ब ड्रॉप एंड लेट्स गिव अ बर्ड्स आई एंगल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन है। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है अभी तक। एक बंदा यहाँ घूम रहा है, एक बंदा वहाँ। 20 सेकंड बचे हैं। हमारा एक बंदा आ रहा है मिड से। देखते हैं क्या ये कुछ कर पाएगा, क्या ये कुछ बेहतर कर पाएगा। लेट्स सी। 16 सेकंड बाकी है इनके पास, बहुत कम वक्त है और हार गए। शर्मनाक मौत। ठीक है। विल नोकिया सर्वाइव? Antonio Almeida, I think, and Nokia has a very tough road now because they are building back on the hype because of their previous brand value. But if they don't have like really great devices in the upcoming 1 year, they won't survive. I will say it, मतलब from pure my personal perspective, कि they won't survive if they don't have great devices. कहाँ से आकर रश कर दिया बंदों ने एकदम। छी। मैं खुद सीजन 2 पे हूँ, स्पॉयलर्स मत दो। एके गेमिंग फेस्ट आई डोंट वॉच फुली, आई जस्ट रेड द होल टेक्स्ट इन ऑर्डर टू ब्रश अप ऑन माय समरी। कि अगर मुझसे कोई कुछ पूछता है तो मैंने पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया। आई रेड द होल स्टोरी इन समरी, तो मेरे लिए ठीक है, टाइम बिना वेस्ट करे आई डिड द होल जॉब। ठीक है। टेक फॉर मोब सेज ब्रो, मेरी जीएफ कहती है कि स्मार्टफोन रिव्यूज करना छोड़ दो, ब्यूटी टिप्स पे वीडियोस बनाओ, ज्यादा व्यूज आएंगे। टेक फॉर मोब, आई विल से वन थिंग टू योर गर्लफ्रेंड इज राइट। मेक अ मेंस ग्रूमिंग एंड हेल्थ केयर चैनल, बहुत व्यूज आएंगे बाबा, डॉलर ही डॉलर। हाँ, कहाँ पर थी? ओके, चलो ठीक है। आई गेस इतना आज के लिए काफ़ी है। 9:59 हो गए, ऑलमोस्ट 10 PM। मेरे को एक MVP मिला। एक बार मैंने बहुत बंदों को मारा और हमारी टीम जीती, उन्होंने सिर्फ एक राउंड जीता। तो बहुत ही शानदार गेम प्ले। इट वाज नाइस प्लेइंग विद यू बॉयज, बॉयज प्लेड वेल। एंड आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अरे नहीं, अभी कमेंट करने लगे फिर से तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिस इज A.N.J from inspiredtorise.com, signing off folks. Stay inspired to rise.